अरे ऑक्टोपस भाई एक बार फिर से ऑक्टोपस। Are you okay? अरे हम अपनी ओशन वाली गेम को कैसे भूल गए भाई। तो इसीलिए आज हम जाने वाले हैं एक बार फिर से ओशन की गहराइयों के अंदर, मिलेंगे कुछ नए नए क्रिएचर्स से। लेट्स स्टार्ट बियॉन्ड ब्लू। मैं अपना स्विम सूट पहन लेता हूँ Day और 7. है डे About to 7। enter the Twilight Zone. I'm following Andrea's family down to the seamounts where I hope to observe them hunting. Arena has been testing our samples and is worried about a harmful algal bloom being somewhere nearby, so I am to keep an eye out for that. Check. I'm also keeping an eye out for more turtles. I know they're out there, ready to go. तो आज हमें टर्टल्स चेक करने हैं, हमें एक एल्गल ब्लूम चेक करना है। I'm in and okay. And we're streaming. Hello, everyone. Welcome, or welcome back. तो आज I'm तो शुरू diving में ही near a स्ट्रीमिंग sea चालू हो गई mountain, ओशन एक्स पे। also known as the Twilight Zone, because it is just beyond reach of the sun. And we'll be taking some questions live, so be nice. We'll also be testing a playback system to interact with whales. तो आज हमें ऐसे जोन के अंदर जाना है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती सन की। Want to hear something cool? So do I. I'm hoping that buoy can send a little message to our humpback friends. That's right. Andre is going to serenade some humpbacks. Well, not me, but using a song I generated from other recordings. तो आज हम्पबैक से भी हमारा कांटेक्ट होगा क्योंकि आंद्रे ने कुछ बनाई है टेक्नोलॉजी हम्पबैक वेल से बात करने के लिए। अननोन क्रिएचर, और ये क्या है? हम्पबैक वेल सिंगिंग सेंसर अलार्म। ये आवाज़ थोड़ी अलग थी। तो चलते हैं भाई आगे। पहले कहाँ चलें? पहले इस वाली हम्पबैक के पास ही चलते हैं, सबसे पास में है जब ये रही हमारी हम्पबैक वेल। Okay. Oh my time to see God. if Zoom any scan to humpbacks record respond song. to our song. Jordan Oh. wants to know how you will know. Great question. If we have recorded him before, we'll see if the influence of our song affected his. Scientists believe whales from one region can influence the song of whales from another when they mix. ओके सो अब हमें इसका स्कैन पॉइंट ढूंढना है। वो रहा स्कैन पॉइंट। स्कैन कर दो से भी। तो इसको तो स्कैन कर लिया। मेरे ख्याल से मैं एक सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहा हूँ या इसका रिस्पॉन्स चेक कर रहा हूँ जो आंद्रे ने सॉन्ग बनाया है। आंद्रे कह रहा हूँ, पता नहीं उसका नाम क्या था गंजे का। Hey Andre, we've recorded a song from this one before, right? We have. How quickly can Andre. you compare his two songs? Well, I need to wait for his song to complete at least one full cycle. And how long is that? 20 minutes, maybe more. Wow, that's a long, slow ballad. ओके सो हमने इस वाली हम्पबैक वेल का सॉन्ग रिकॉर्ड कर लिया। अब कहाँ चलना है? अब ये 70 मीटर्स है तो इसके पास ही चलते हैं पहले। ये क्वेश्चन मार्क जो आ रहा है ये बड़ा एक्साइटिंग है भाई। ये क्या है? ऑरेंज रहोगी। देखो सारी मछलियाँ तितर बितर होली मेरे आते ही। Another leatherback turtle, Unknown Andre. creature. And feasting on some moon jellies. That is टर्टल। odd. Is that the same one we saw before? तो ये क्या खा रहा Looks है? bigger, but let me zoom Jellyfish? scan it to be sure. जेलीफिश खा रहा है। ये टर्टल देखो जेलीफिश खा रहा है। और तेरी भाई We can run the sample in the lab, but I am sure this is a different one. Do they typically travel together? Wouldn't it be surprising to find two this far off course? Yes, it would be. And yet, here they are. स्कैन करना है जेलीफिश को। Back turtles, enjoy your beautiful moon jellies. Moon jellies are beautiful. There's a decent chance this jelly will regenerate itself. Do tell. In fact, a few species of jellyfish are technically immortal. They can revert from being full grown to their younger state and essentially start their life cycle over. Thank you, Arena, who will make us all immortal one day. सो जेलीफिश इमॉर्टल है जैसा कि हम लोगों को पता है। एंड जब वो एक फुली मैच्योर ग्रोन स्टेट में चली जाती हैं तो वो रिवर्ट बैक कर सकती हैं यंग स्टेज के अंदर। तो इस वजह से वो अपनी लाइफ साइकिल को दोबारा जी सकती हैं एंड इसी वजह से वो इमॉर्टल हैं। तो अब चलते हैं अपने अगले मार्क की तरफ जो कि 40 मीटर्स आगे है। ये कौन सी मछली है भाई? शार्क है। मैं कहा Squid. It looks like they're hunting. अरे भाई, Lanternfish.
Well called, Arena. We'll make you a sea witch yet. I'm sorry, a what? Let's scan a few to pick up their hunting behavior. Here goes. स्क्विड, ये स्क्विड ही है क्या? हाँ ये स्क्विड है। तो 3 स्क्विड स्कैन करने हैं। भाई आधे से ज़्यादा क्रिएचर्स के बारे में तो मुझे ही नहीं पता। Scott from Denver wants to know if they eat each other. Some do. I think this one was upset he missed out on his prey. ओके, तो ये एक दूसरे को भी खा जाती हैं। अब हम चलते हैं अपने नए ऑब्जेक्टिव की तरफ जो है 75 मीटर्स आगे। सेंसर अलार्म, सेंसर अलार्म, तो सेंसर अलार्म। चलो भाई जल्दी, पहले इस वाले पे चलते हैं जो ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है 44 मीटर्स आगे। जल्दी चलो भाई। Great. I've been waiting for this. I have just activated your UV light. First of all, don't mess with my suit when I'm diving. Secondly, you spoiled my surprise. ओ यूवी लाइट है वो हमारे सूट के अंदर। यूवी लाइट से होगा क्या वैसे? देखते हैं, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ भाई। Oh, one of our sperm whale tags must have fallen off. Andre, you really need better glue for these. I don't use glue. के अंदर जाना है मुझे मेरे ख्याल से। तो ये रहा ना हमारा सेंसर टैग। I've इसे tracked down the कलेक्ट tag. करना। It's in a cave. I wonder how it got in here. अरे ऑक्टोपस भाई एक बार फिर से ऑक्टोपस। Are you okay? Other than getting inked in front of a live global audience? You know, you might want to get that off you. It will ये probably ऑक्टोपस के लिए छेद बनाया है ना उन्होंने। ये दूसरी बार है जब मुझे ऑक्टोपस मिला। एक बार पहले भी मिला था जब हम शार्क के पास गए थे। ये ऑक्टोपस ऐसे ही छुपे फिरे रहते हैं क्या? जूम स्कैन यूजिंग वाइट लाइट। अच्छा जूम स्कैन करना है मुझे। वाइट लाइट से जूम स्कैन कैसे करूँ मैं? अच्छा ये आ गया ना मेरा क्वेश्चन मार्क। इसके पास जाना है मुझे। जूम स्कैन करो भाई। चेंज टू यूवी लाइट वॉयलेट। अच्छा ये अच्छा यूवी लाइट से कुछ Swell sharks have डिफरेंट developed तरीके का दिख रहा है biofluorescence मैं। to communicate with each other. Their eyes have special adaptations for the UV light. Now you can see what a swell shark sees. That's what I'm Oh. talking about. अच्छा जी, तो ये यूवी लाइट चल गई। अच्छा तो मतलब जो ये स्वेल शार्क है ये भी यूवी लाइट इसकी आंखों में नेचुरली फिट है। तो हम जो हम देख रहे हैं ना यूवी लाइट की मदद से वो स्वेल शार्क नेचुरली देखती है। तो इसको मैं पहले ऑफ कर देता हूँ यूवी लाइट को अपनी। अब मुझे जाना है 40 मीटर्स, दोबारा वहीं पे जाना है क्या? तो इसको भी जूम स्कैन कर लेते हैं। अब वाइट लाइट से मुझे स्कैन करना है तो वाइट लाइट लगा देता हूँ पीछे को। यस Next, दोनों you can टास्क try the कंप्लीट कर black light I लिए। installed in your sub. You did not. You did install it in your dorm room back in the आंद्रे day. ने कितनी सारी लाइटें लगा दी, डिस्को सा बना दिया मेरा It was a स्विम good सूट। time. ये कौन सी फिश है? वही फिश होगी स्क्विड। ऊपर कौन सी फिश तैर रही है? इस ओशन सन फिश। तो अब हम चलते हैं अपने अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ जो है 20 मीटर्स आगे। Okay, last boy of the dive. How are you feeling? Chances of suit holding out until the end of the dive? Good. Hope of seeing if our humpback song had any effect? Well, You know this, but for the viewers, science is not magic, it takes patience. I'd like to believe in a little magic. अननोन सेंसर, स्पर्म वेल। अच्छा अब हम अपनी स्पर्म वेल फैमिली के पास जाएंगे, आंद्रिया के पास, ऐसा मुझे लग रहा है। तो चलते हैं स्पर्म वेल के पास। Sperm whale, I think it's. Yes, it's hunting! First time we'll be able to document it with Andre's technology. हंटिंग? क्या हंट कर रहे हैं?
साउंड्स Come on. And then the buzz. I got it. कहाँ मिल गया भाई? Raj from Mumbai wants to know, what's the buzz? I think he was making a joke. Got it. But what is the buzz? How is it used? We're not entirely sure, but definitely associated with being close to prey. This is just a warm-up. The real fun will come in the deep. और भाई बस राज पूछ रहा मुंबई से, तो इंडिया से भी आती है इनके पास मैसेजेस. जूम स्कैन फॉर टैग एंड बायो सैंपल्स. ओके, Andre. क्या हो गया? There's no way these little ones are thousands of miles off course. Right, Andre? Give बायो him a सैंपल minute. फॉर जेनेटिक फुटप्रिंट. Right. Let's scan a few of these to get their gender. There's a tiny tag here. Andre? तो इसको भी जूम स्कैन कर लेते हैं. टर्टल्स. Chen from Shanghai wants to know why you care about their gender. Well, their sex is determined by the temperature of their nests. Warming beaches wiped out the turtles in this region. Believe in a little magic now, Andre? I may just start, but let me check on that tag first. तो जो ये टर्टल्स हैं, इनका जो जेंडर है वो इस बात पे डिटरमाइन होता है कि इनका जो नेस्ट है उसका टेम्परेचर क्या है. ये क्या हो रहा है भाई? Oh, wow. Glad we didn't miss this. कहाँ जा रही हैं हमारी स्पॉन्जेस? Yeah, they must have been hunting down past the rift. I think we found our spot for our first deep dive. Mirai, check out that one closest to you. What's that on its skin? Not sure I can catch them. They're headed to the surface. Might just be a scrape from a ship strike. Yeah, let's hope that's all it is. Oh. Let's end it here. जो हमारी जो स्ट्रीम है वो एंड हो चुकी है और हमारा डे 7 भी एंड हो चुका है. I know it seems like Andre worries about everything. But I really understand where that comes from. Everyone's seen the pictures, but I can tell you it was really tough to be doing hands-on work when we were losing entire species. For me, it was the whales. But for Andre, it was the turtles. I stayed to help him. Several of the other scientists did as well. By then, only Andre's protected nests were the ones producing turtles in the region. We all figured that the population was going to collapse, and eventually it did. But seeing this large man spend day after day carrying tiny turtles from the nest to the water, it inspired us to stay. तो जो हमारा आंड्रे है वो टर्टल लवर है Now it feels एंड like उसने home. कई सारे टर्टल्स को बचाया है. उनकी जो पॉपुलेशन है उसको कम नहीं होने दिया है. एंड इस ओशन के अंदर जो लार्ज पॉपुलेशन है टर्टल्स की वो आंद्रे की वजह से ही है, क्योंकि उसने प्रोटेक्ट किया उन्हें. तो आंद्रे का एक स्पेशल लगाव है टर्टल्स के लिए. तो पहले हमें मैसेज करना है आंद्रे को. हम डायरेक्ट अपनी चेयर पे आ गए क्या? Hi, Mirai. Sorry to miss the post-dive brief. I've been listening to our humpback recordings for hours and got myself in a kind of funk. Actually, I started listening to the humpbacks and then switched to Miles Davis. Anyway, I don't see any clear sign that our playback influenced any of the other whales yet, but I just know we're on the right track. I'm sorry to be in such a mood. Don't know what to make of those turtles or what's going on with our sperm whale family. Right. Catch you in a bit. तो इरीना को कॉल करना है अब हमें. डाइव रेडी. तो चलते हैं अपने डेट की तरफ एक बार. देखते हैं क्या सरप्राइजेस हैं आगे. Day डेट 12. 12. Spent the last 5 days on an endless series of depth tests of Andre's deep diving suit. Guess he doesn't want me to implode on the live stream. I do hope it's giant squid proof though. The mapping drone located a brine pool near where Andrea's family has been hunting. That is before it went AWOL. Ready to die. I mean die. Ready to die. अरे मैं आज ओ भाई I'm मैं in 3 and okay. You sure I can't give it to another test dive 3733 मीटर्स instead नीचे. of the stream? पूरा अंधेरा ही Enough test अंधेरा. dives. It's not like I'm doing a spacewalk. Well, with this suit, you probably could. Are we gonna talk about suit crush depth again? I think we can probably roll. भाई Starting कितना live नीचे stream. उमाज. Welcome back, ocean friends. दोबारा streaming चालू हो Tonight, गई. I am deep. Midnight zone, no light from the surface deep.
Tonight, we're using Andre's lure drone to mimic the Atolla jellyfish to lure large predators like the giant squid. It's certainly not all my tech. I'm building on years of prior research. Don't forget our और mission ये to क्या the पिराना Brine मछली सी है बे? Oh, yes, Arena will fill you in on that later. अटलांटिक फुटबॉल फिश ड्राई किया था इसलिए तो मुंह खोल के आ रही थी। तो चलते हैं अपने इस सेंसर टैग की तरफ। 50 मीटर्स अहेड है जो। भाई बिल्कुल लाइट नहीं आ रही। Okay, अगर मैं Andre, अपने how सूट do की I लाइट find बंद the कर दूं lure ना drone? तो Look अंधेरा for हो जाएगा। blinking red lights in the water column. ओह रेड लाइट, ट्रेन लाइट ल्योर, एक्टिवेट कैमरा ल्योर। तो ये नया डिवाइस है No जो need to आंद्रे get ने too बनाया। close. You can activate the lure from there. Andre, have you done this before? I haven't, but others have. How long until we can expect the lure to attract a predator? It's hard to say. It's a big ocean. But if you lose patience, Jellyfish. I would find some real Atolla jellyfish. I have a feedback jellyfish. system set up to improve the lure as you scan them. Of course you do. For those watching, we will be scanning these Atolla jellyfish to make sure Andre's lure matches the real thing. It does, but it can always be refined. Not much confidence in humanity, but plenty in himself. Got the jellyfish scans, though Andre doesn't need them. In truth, they should improve the lure. I would not waste your time. Getting a few impolite comments on the screen pointing out that giant squid don't feed on Atolla Zoom jellyfish. scan Atolla fish They're to right. train lure. Actually, the Atolla puts on this light show when under attack, in order to lure creatures big enough to eat their attacker. It might have some useful human applications. I think we need more Atolla scans to approve the lure. Okay. Whose idea was it to live stream this particular dive? I am glad I can't see the comments. I would agree. My grandmother had a saying for times like this. I'm not going to try my grandmother's accent on a live stream, but loosely translated, it means if you get bored waiting for a giant squid, you can always go to a brine pool. That's a pretty तो मैं इस specific ल्योर को saying. ट्रेनिंग करा रहा हूँ क्या बस जेलीफिश को स्कैन कर करके? ये किस बात की ट्रेनिंग चल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इस वाले इसमें। I noticed that these atollas were already making their blue alarm before you swam close. Most likely a sign that they have detected predators in the region that threaten them. तो जो ये जेलीफिश है इन्हें डर लग रहा है मेरे से। मैं इनके पास नहीं जा सकता ज़्यादा। ये अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेट कर लेते हैं जैसे मैं इनके पास जाता हूँ। इसलिए मैं दूर से जूम स्कैन कर रहा हूँ। अबे ये क्या हुआ? ऑक्टोपस। That gave me a chill. एक बार फिर से ऑक्टोपस से मुलाकात। ऑक्टोपस हमेशा से ही मुझे एकदम जंप स्केयर से देते I हैं। know how much you enjoyed that, but Scary jump scare नहीं है, Mind if we check enjoyable out jump Brian scares हैं। before we check on our whale cam? If you insist. You got what you wanted. This is my giant squid. Is that another one of your grandmother's sayings? No, but she often used this one. Hurry up and collect my specimens for me. What an expressive language. It's no giant squid, but I promise you, you won't have to wait to find it. At long last, welcome to the brine pool. I know it's really a salt lake under the ocean, but it looks more like a witch's brew. I have been Collect teasing around, microbial but mat a brine samples. pool is a diverse microenvironment within the ocean. It has its own ecosystem. And each one is unique. So that means the microbiology is unique and could hold groundbreaking solutions to human problems. Each time I take new samples into a lab here on this ship, it's this magical discovery moment where I tingle all over. I fund my own research so I can pursue what I know to be important. And people ask me, how much money are you going to spend to collect some bacteria at the bottom of the ocean? If these bacteria hold the cure for a disease that relieves even just a small amount of human suffering, how do you put a price on that? That is some giant squid. तो मैं माइक्रोबियल मैट को कलेक्ट कर रहा हूँ ताकि कुछ सैंपल्स मिल सके एंड जो हमारी इरियाना है वो उस पर रिसर्च कर सके। वो बोल रही है कि मैं कुछ रिसर्च करूँगी इनके ऊपर ताकि जो ह्यूमंस की सफरिंग्स हैं डिसीज़ को लेके वो ठीक हो सकें थोड़ी बहुत। तो एक और कर सिलेक्ट करना है, अब आ नहीं रहा ऑप्शन, ये रहा ना। इसको करते हैं कलेक्ट। अलग अलग जगह से मैं वो सैंपल्स ले रहा हूँ। स्कैन हैकफिश, ये हैकफिश ही है मेरे ख्याल से।
एक और को सिलेक्ट करना है, ये रहा हमारी हैगफिश, इरिना हैगफिश। ओके, तो मैंने ये दोनों कंप्लीट कर दिए टास्क। अब दोबारा अब ऊपर जाना है मुझे थोड़ा सा। भाई देखो बिल्कुल लाइट नहीं आ रही सन की। Right, pushing your waypoint. Sperm whales are back on the hunt. Look for the drones. They will seek out the sound of the sperm whales and then idle nearby. We hope that today Andre's tech will make it possible to document how a sperm whale hunts the giant squid. ये रही स्पर्म व्हेल। अब हम देखेंगे कि कैसे ये हंट करती है। Let's go tag some sperm whales so we can eavesdrop on their hunting. One of our viewers wants to know if there is a problem with the link, since the waypoints keep appearing and disappearing. No problem. The drones are in stealth mode, so they will only track the whales by sound. I better swim fast. Enable tag receiver। ओ भाई ऑक्टोपस पकड़ लिया। ऑक्टोपस ने इसे पकड़ लिया, इसने ऑक्टोपस को पकड़ लिया। What just happened? I think the squid knocked the camera right off. I had that camera feed in full screen on my visor, and for a second I thought it was lights out for me. Sounds like a good time for the sub to pick you up. Live stream out. ओके, तो हमारी लाइव स्ट्रीम ख़त्म हो चुकी है एक बार फिर से। तो पहले चलते हैं अपनी हेड चेयर के पास। तो पहले मैसेज करना है इरियाना को। It's Irina. Since there's no dive today, I'm going to lose myself in the wet lab to work on those samples you sent up from the brine pool. Hey, have you listened to my daughter's track? Interesting, right? मैसेज हो गया इरियाना का। एंड्रे का मैसेज। Hi. Remember the tag we found on the turtles? I put it out on the network and I got the strangest message back. I'm going to take a tender to a small island nearby and check it out. I'll explain everything later. Still no mapping drone, by the way. Message Ren. Hey, it's me. Nana didn't qualify for the study. Doctor says we missed the window. Whatever that means. Hey. Hard to tell what she remembers now. It's tough. Not sure my head's 100% there with school. Honestly, seems like a waste of money. Anyway, see you. इस वाले वीडियो के अंदर इतना ही। अपनी बियॉन्ड ब्लू को कंटिन्यू रखेंगे अपने अगले एपिसोड्स के अंदर। अगर तुमको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।